Hi, what are calcium channel blockers? What are the therapeutic uses? What are their adverse effects? How should I write them in the exam if this comes in my university examination? If you're a pharmacology student and you want to know the exact information, like how much is enough for you to know so that you can attempt it absolutely in the most precise and effective manner in your exam, this is the video to watch out for. So please stay with me till the end, and I'll tell you what exactly should the information be. And I guarantee, अगर 5 number question है, you have to get a 4, at least a 4. All right. Started with calcium channel blockers. Now, calcium channel blockers के बारे में and what I'm going to do in this video are your types of calcium channels. What are the various calcium channel blockers? Because you have to know the classification, right? Mechanism of action, uses, ADRs, and drug interactions. That's all that you should know about this particular topic, as it's very important when it comes to the examination that puts there. CCBs are very commonly asked. Let's first go to types of calcium channels, and you have voltage gated calcium channels, receptor operated calcium channels, stretched operated, and sodium calcium exchange channels. Now अगर हम calcium channel blockers की बात करें, so the most important for you actually are these voltage gated calcium channels. इनके further 3 types होते हैं. One is your L type. L type इसलिए कहते हैं because they are long lasting. They remain open for a long period of time. Then you have your T or the transient type. So transient क्या होता है? थोड़ी देर के लिए. So these channels open up for a very small amount of time. And then it is your neuronal channels which are present in the neurons. Now these voltage gated calcium channels जो L type हैं, they are present in your cardiac muscle, heart में, and they are present in your smooth muscles. So whether they are in the blood vessels or your various organs like uterus, ठीक है, gallbladder, etc., they're present there. Now your T type जो channels हैं, so T is for transient, but T से also you remember thalamus. So they're also present in the thalamus. Now इसके बारे में मैं अभी एक very important point I'll tell you. Then we will not talk about T. So अगर इसका सबसे ज़्यादा importance कहाँ है? If you remember, this was covered in the topic of epilepsy. Now ये जो T-type calcium channels होते हैं, they are very or you can say they are overfiring in a special type of epilepsy that we call as absence seizures. Absence seizures. So ये type जो channels हैं, इनको जो drugs absence seizures को treat करती है, they are those drugs which actually will block these type of calcium channels. And the drugs which are the drug of choice is ethosuximide and even your sodium valproate. So इनका importance कहाँ है? In absence seizures, and absence seizures को treat करने के लिए हमारे पास 2 important drugs हैं, because these are the only drugs which are effective on the T-type calcium channels. Ethosuximide, valproate. Done. इसका न्यूरॉनल चाहे कोई खास हमारा भी रोल नहीं है, and we will not go into any detail about this. You don't have to know about this channel. Coming to the other channels which are receptor operated calcium channels. So नाम से पता लगता है there is a receptor, so G protein coupled receptor. Let's say there is alpha 1 receptor, and इस पे एड्रेनलिन आके लगेगा, and जो इसके यहाँ पे जो G protein लगा होता है, which you have the alpha, beta, gamma subunit, and it dissociates into alpha with the GTP, and beta and gamma separates. So this alpha GTP, they can further go and they will open up a calcium channel. So this calcium channel opens up only when there is a receptor which attaches, a ligand attaches to the receptor. That is all important to know. So adrenaline is an example of such. Adrenaline binds to alpha 1, leads to opening of the calcium channels.
स्ट्रेच ऑपरेटेड कैल्शियम चैनल्स का मतलब क्या है? स्ट्रेच, खींचने से ये खुलते हैं. सो मसल्स में कुछ चैनल्स होते हैं थोड़े से लीकी चैनल्स, तो जब मसल स्ट्रेच करते हैं तो ये चैनल्स अपने आप ये होते ही लीकी हैं थोड़े थोड़े से, तो कैल्शियम अंदर मूव करता है. इट डजंट डिपेंड ऑन एनी वोल्टेज समथिंग. सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज चैनल्स, दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट. राइट. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो. इंट्रोडक्शन जरूरी है बिकॉज यू शुड नो कि कितने कौन से कैल्शियम चैनल्स हैं. एंड टू टेल यू, जो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से चैनल्स को ब्लॉक करते हैं? दैट इज ओनली योर एल टाइप. और किसी चैनल्स पे ये असर नहीं करते. ऑल दोज अदर चैनल्स आर रेजिस्टेंट टू इट, सो दे ओनली वर्क ऑन एल टाइप वोल्टेज गेटेड चैनल्स. I hope I'm clear up to this. Now, voltage gated calcium channels का मतलब ये है, जो these channels हैं, they actually open up when a specific voltage is reached. So -40 millivolts or more. ठीक है. Normally हमारा resting membrane potential is like -70 90 इसके बीच में रहता है. So when it reaches to -40, these calcium channels will open and your calcium starts entering inside the cell. Obviously, the potential is going to be more positive inside the cell. So this is the voltage gated. That is why they're called voltage gated, because they depend on the change in the voltage. So voltage change की वजह से they will open up. Nothing else. No receptor, और कोई तरीका नहीं है, स्ट्रेच ये वो, नथिंग वर्क्स. ओनली दे आर डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज. सो दे ओपन एंड आफ्टर सम टाइम दे बिकम इनएक्टिव एंड आफ्टर सम टाइम दे गो इनटू अ रेस्टिंग मोड. ठीक है. सो इनएक्टिव मोड एंड रेस्टिंग मोड, and then again they come back to the open state. तो कोई भी आयन चैनल्स जो आप करोगे with the sodium channels, they all go through this mode. ओपन रहते हैं, फिर इनएक्टिव हो जाते हैं और फिर रेस्टिंग मोड में जाते हैं. सो चाहे वो इनएक्टिव हैं चाहे वो रेस्टिंग मोड पे, दे डोंट रिस्पॉन्ड. ठीक है. सो दिस इज द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स. और जो इसमें वोल्टेज गेटेड में भी हम एल टाइप की बात कर रहे थे बेसिकली. दिस इज द एल टाइप चैनल्स. ठीक है. एंड एज आई टोल्ड यू, these are long lasting channels. ठीक है. long lasting channels होते हैं and they are present in your heart and they are present in your smooth muscles, heart में and smooth muscles. Right. Now, what are the role of these L-type calcium channels? Very important to know. On the heart में कहाँ हैं? They are present on the SA node, they are present on the AV node, and they are present on the myocardium. So let's see here in this diagram. This is the green area here. This is your SA node. The pink area here is your AV node, and I have also shown the myocardium. Now, SA node ka normally what is the action of SA node? It is to generate the heart rate. The impulse generation hoti. That's why it's called the pacemaker. So what the calcium channels are first doing, not the blockers. Abhi hum channels ki baat kare. So when calcium enters here, it is going to increase this ability of SA node. So what is they are helping in? They are increasing the automaticity in the SA node. So if I have to write here, they increase the automaticity. इसका मतलब है ये हार्ट रेट पे इफेक्ट करेंगे. AV node का मेन एक्शन क्या होता है? फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस. So what L channels do? They help in the conduction of impulses. Myocardium. So when they are going into the myocardium, what happens in the myocardium? In the myocardium, जब calcium enter करता है, so what it does is, यहाँ पे myocardium में sarcoplasmic reticulum के अंदर भी ये एक sarcoplasmic reticulum है and इसके अंदर calcium stored होता है. So when these calcium enter through the channel, they will help in the release of calcium from sarcoplasmic. इस sarcoplasmic reticulum से भी calcium बाहर निकलेगा, और जो ये calcium बाहर निकलेगा ये क्या करेगा? एक्टिन और मायोसिन से interact and this leads to contraction. So this leads to increase in the force of contraction. Contraction है, myocardium muscle है जो they will contract.
So what they do, they increase the force of contraction. So they increase the heart rate, they increase the conduction, they increase the force of contraction. That is what they do to the heart, right? Now what do they do in the smooth muscles of the blood vessel? अब ये blood है, vessel है, यहाँ पे this brown portion, this is this muscle. अब यहाँ पे क्या होता है? If you see, the calcium is entering here. Again it is triggering, it is releasing the calcium which is stored in the sarcoplasmic reticulum. This calcium combines with a special protein called calmodulin, और वो क्या करेगा? Again myosin को एक्टिवेट करेगा, वो एक्टिन से कंबाइन करेगा एंड इट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन. सो ब्लड वेसल्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. सो दिस इज द ब्लड वेसल्स के. सो ब्लड वेसल्स की इट वेजो कंस्ट्रिक्शन. द वेजो कंस्ट्रिक्शन इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम. और अदर स्मूथ मसल्स, लेट्स से दे आर इन द GIT, लेट्स से दे आर इन द यूट्रस और एनीवेयर इन द गॉल ब्लैडर एटसेट्रा, they will all contract. Right, so it causes contraction. So this is the role of L-type calcium channels. Calcium का हर एक जगह रोल contraction, C for calcium, C for contraction, contraction करनी है. Now if I talk about the calcium channel blockers, simply what they do, right, they are going to they will block the L-type. They block the L-type calcium channel. Simple. They will block the L-type calcium channel because और तो कोई channel respond नहीं कर रहा, only the L-type response. So they will block the L-type calcium channels, and this is the mechanism of action. और as a result क्या क्या होएगा? As a result क्या क्या होएगा? जो हमने किया, जितने भी effects किए उनको उल्टा कर देते हैं. SA node automaticity, that means it will decrease the ऑटोमेटिसिटी दी SA नोड, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड वेसल्स रिलैक्स करेंगे, स्मूथ मसल्स रिलैक्स करेंगे. सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द CCP. सो इफ यू नो द कैल्शियम का इफेक्ट, यू कैन ईजिली गो द CCPs का इफेक्ट. सो फर्स्ट आई एम एक्चुअली गोइंग टू गो अबाउट द मैकेनिज्म, देन आई विल कम टू द ड्रग्स. ठीक है. सो ऑन द हार्ट व्हाट इट डज इज इट डिक्रीजेज द हार्ट रेट, it decreases the conduction, that is through the AV node, it decreases the force of contraction, this is on the myocardium. So negative inotropic, negative chronotropic, negative dromotropic effect. और ये सारा जब हार्ट पे काम करता है तो अल्टीमेटली क्या, हार्ट का हार्ट रेट भी हार्ट को कम हो गई, कंट्रैक्शन भी कम हो गया, कंडक्शन भी कम हो गई, तो हार्ट का काम तो उसने कम कर दिया. ठीक है. तो इससे क्या होएगा, जब हार्ट का काम कम हो जाता है, अगर हमें कम काम करना है तो हमें कम खाना चाहिए, अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें ज़्यादा खाना चाहिए. सो इसलिए हार्ट का खाना क्या है, ऑक्सीजन. सो अगर हार्ट को थोड़ा कम काम करना पड़ रहा है तो उसकी ऑक्सीजन जो डिमांड है वो अपने आप इट विल बी लेस. ठीक है. सो इट डिक्रीजेज द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट. And why do you think it is important for the heart to have a low oxygen demand? In certain cases जहाँ पे heart is already compromised, heart is already weak, and हम नहीं चाहते poor heart कि और ज़्यादा उस पर बोझ पड़े काम का, तो हम काम उसका कम कर दें because already वो weak है. We'll see how they are used. And similarly जो smooth muscles पे अगर effect हम बात करें, अगर blood vessels की बात करते हैं, blood vessels की, so it causes relaxation. एंड इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है आर्टीरियोल्स पे. आर्टीरियोल्स पे द रिलैक्सेशन इज मोर. सो व्हाट विल हैपन एक्चुअली इफ यू गो हियर, सी योर लेफ्ट वेंट्रिकल इज गोइंग टू पंप ब्लड इनटू द आयोटा, एंड आयोटा फिर आगे जाके, ठीक है, एंड देन इट विल बिकम स्प्रेड इनटू आर्टीरियोल्स एंड एवरीथिंग. सो अगर आर्टीरियोल्स वगैरह में रिलैक्स्ड है, सो दिस ब्लड फ्लो इट विल गो नॉर्मली. इसको कोई कंस्ट्रिक्शन और कोई रेजिस्टेंस नहीं है. सो बेसिकली व्हाट दे डू इज दे रिलैक्स द आर्टीरियोल्स, सो रिलैक्स द होल आर्टीरियल पार्ट, सो देर इज लेस रेजिस्टेंस हियर टू द फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट. सो जब लेफ्ट वेंट्रिकल, आपका ये वेंट्रिकल है और ये आपका आयोटा है, ये आपका वेंट्रिकल ब्लड फ्लो कर रहा है, थ्रो कर रहा है इन द आयोटा. तो अगर आयोटा नॉर्मल है तो आराम से ब्लड जाएगा इसमें. पर अगर किसी कारण ये कंस्ट्रिक्टेड है तो इसको और जोर से पुश करके इसको ब्लड करना है, पंप इनसाइड.
तो नॉर्मल हार्ट तो कई बार ही कर लेगा, पर अगर ऑलरेडी बीमार हार्ट है, वो वैसे ही कमज़ोर है, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो फेल हो जाएगा. सो ऐसे कंडीशंस में हम अगर इसको रिलैक्स कर दें, आपके जो आर्टीरियल सिस्टम को वहाँ पे आयोटा एंड आर्टीरियल्स को, सो ये रिलैक्स हो गया. सो नाउ वीक हार्ट भी आराम से इसमें ब्लड पंप कर सकता है. सो इट डिक्रीजेज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस. That is another important aspect of CCBs. It can be used in such conditions where you have to, decrease the peripheral resistance. So that is in case of the blood vessels. And if you talk about the smooth muscles in the other areas, for example, uterus में it will relax the uterine muscles, gallbladder relax करेगा, GIT में relax करेगा. So it has relaxation wherever they go, the CCBs. Now what are these CCBs? Now this means what if you are asked to classify. So they belong to three groups: phenylalkylamine, benzothiazepine and dihydropyridines. Some also write it as dihydropyridines and non-dihydropyridines. तो non-dihydropyridines में पहले दोनों आते हैं जो BP वाली ड्रग्स हैं, benzothiazepine and phenylalkylamine. जो phenylalkylamine में we have a drug called as verapamil, and benzothiazepines में we have a drug called as diltiazem. More important are your dihydropyridines. So dihydropyridines, they have quite a lot of drugs, and few of them are nifedipine, nimodipine, ठीक है, nifedipine, nimodipine, longer acting drugs like amlodipine. Then we have lasodipine and felodipine and so on. So इन सब में डिपिन कॉमन है. तो इसमें स्पेसिफिकली हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो इसी हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रो इज़ लाइक लिक्विड वाटर, और उसमें डिप कर सकते हैं. तो जो भी डिपिन वाली ड्रग्स हैं वो डाईहाइड्रोपिरिड, जिसमें हाइड्रो है, ठीक है, हाइड्रो में डिप कर सकते हैं. टू रिमेंबर दिस हैक, टू रिमेंबर. दूसरा verapamil and diltiazem के बाद, verapamil is more effective on the heart. They are more specific for heart. Dihydropyridines are more specific for your blood vessels, smooth muscles में. diltiazem बीच में. So जो heart पे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो verapamil का होता है. That is force of contraction decrease करना, heart rate decrease करना और conduction decrease करना. वो ज़्यादातर अगर हमें वो actions चाहिए, then we use verapamil, or we can even use diltiazem. It has a lesser effect, but it can be used. But blood vessels में अगर relaxation of blood vessels चाहिए, then we use your dihydropyridines. So the simple hack to remember, I told you, hydro means liquid में dip कर सकते हैं, तो dipins belong to dihydropyridines, और liquid क्या है यहाँ पे, blood. So they are more effective in relaxation of the blood vessels. Remember this. So never, write the ulta thing. That is going to be a major mistake. So dihydropyridines, specially specific for the blood vessels, and phenylalkylamines are specially specific for the verapamil, or the heart actually. So this is your classification. And we've done the mechanism. Now let's come to the uses. So this is important. Question aata hai, what are the uses of calcium channel blockers? Now, first I'll tell you the uses, and then I'll tell you another hack to remember these uses. Right? Cool enough? Okay. The first use is as your in the ischemic heart disease. So ischemic heart disease में आपका basically we are talking about angina. So angina में क्या है, like what you basically आपका aim यही है कि आप उसमें cardiac workload कम करना चाहते हो patient का. There is a tendency that अगर ज़्यादा exert किया heart को तो it will land into myocardial infarction. So you want to decrease the workload on the heart. So for that I told you the best drugs to use are verapamil like that. Now angina, basically we have two types of angina, classical and one is Prinzmetal's. Prinzmetal में basically the problem is there is already vasospasm of the vessels है. क्लासिकल में होता है कि रेस्ट पे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब पेशेंट एक्सरसाइज करना शुरू करता है, बिकॉज उसके जैसे ये वेसल है उसकी, दिस इज द वेसल
एंड उसमें प्लाक ऑलरेडी अथीरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, तो ऑलरेडी देयर इज लेस स्पेस। जैसे इतना वेसल है, यहाँ पर उसका वो गंद भरा हुआ है, ठीक है, लिप पे प्लाक भरा हुआ है, तो कम होगी जगह ब्लड फ्लो के लिए, तो हार्ट को एरिया को कम ब्लड जा रहा है, सो दैट इज़ वाई प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही है उस एरिया की। सो दैट इज़ द रीज़न। सो नॉर्मली शायद वो पेशेंट, हम जब बैठे हैं तो हमारा हार्ट उतना काम कर पा रहा है कि भाई हमारे हार्ट को उस ब्लड वेस्ट जा रहा है हार्ट पे एरियाज में, पर जैसे ही हम एक्सरसाइज करना शुरू करें, भागना शुरू करते हैं, एंड यू नो आपका बॉडी का डिमांड बढ़ जाएगा बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग, योर हार्ट नीड्स टू पंप मोर ब्लड, पर वो कहाँ से पंप ब्लड करेगा जब उसका ऑलरेडी द वेसल्स में जगह ही कम है, तो पेशेंट को फिर पेन होना फील होता है। तो ऐसे केसेस में अगर हम वेसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं तो देयरफॉर दीज CCBs कैन, डाइहाइड्रोपिरिडीन्स कैन बी यूज। दूसरी चीज़ है कि आप कार्डियक वर्कलोड कम कर दो, ठीक है, ऐसे में, एंड देयर वी कैन यूज विरापामिल, तो कार्डियक फंक्शंस को थोड़ा डिप्रेस कर दो। नाउ इन प्रिंसमेटल एंजाइना में क्या प्रॉब्लम है, ऑलरेडी देयर इज स्पैज्म, ठीक है, स्पैज्म है, एंड पेशेंट चाहे बैठा है उसको तब भी प्रॉब्लम बिकॉज ऑलरेडी देयर इज स्पैज्म। सो वहाँ पे बिकॉज यू कैन नॉट यूज क्लासिकल बीटा ब्लॉकर्स ऑल्सो इफेक्टिव बिकॉज दे ऑल्सो डिक्रीज द exercise tolerance, they also decrease the heart rate, you know, beta 1 blockers, जो beta 1 receptor क्या करता है, हार्ट पे डिक्रीज करता है एंड द कंट्रैक्शन डिक्रीज करता है, तो वो भी आपका हार्ट का वर्कलोड कम करता है। तो क्लासिकल में आप बीटा ब्लॉकर्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड देन CCB यूज करते हैं, पर प्रिंसमेटल में प्रॉब्लम ये है कि देयर इज स्पैज्म ऑफ द वेसल्स, तो वहाँ पे हम कभी भी बीटा ब्लॉकर्स यूज नहीं करते यूजली, एंड बिकॉज अगर बीटा 2 रिसेप्टर्स पे वो एक्ट करेंगे तो वो वेजोस्पैज्म यूज करते हैं, सो वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं CCBs। सो एंजाइना में बेसिकली जस्ट रिमेंबर वी हैव टू डिक्रीज द मेन इज द वर्कलोड, हमने डिक्रीज करना है। हाइपरटेंशन इज द डिजीज ऑफ द वेसल्स, तो आपको वेसल्स को डायलेट करना है, सो यहाँ पे भी हम डाइहाइड्रोपिरिडीन्स प्रेफर करेंगे। सो एम्लोडोपिन इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रग विच इज वेरी वेरी कॉमनली यूज फॉर हाइपरटेंशन, सो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, हम OD BD इसको यूज कर सकते हैं। अरिथमियाज मीन्स कार्डियक रिदम इज नॉट प्रॉपर, एंड इसमें जो मेन चीज़ है, जैसे ये एट्रिया है, ठीक है, और ये वेंट्रिकल्स हैं, सो एट्रिया इज बीटिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, लेट्स से एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई है या एट्रियल फ्लटर हो गया, सो दे आर बीटिंग इट वेरी फार 250-300 बीट्स अ मिनट, एंड बीच में हमारा आता है AV नोड, सो ऑल द इम्पल्सेस आर गोइंग टू पास थ्रू दिस एंड दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द वेंट्रिकल्स। Now, atrial fibrillation is dangerous नहीं जितनी कि ventricular fibrillation, because ventricle when they fibrillate like this, they cannot pump blood properly. So ठीक है, they need normal contraction and relaxation to fill in the blood and to throw the blood or pump the blood. पर जब ये ऐसे fibrillate करेगा, it won't be able to pump the blood. So ultimately patient can die. So ventricular fibrillation are very very dangerous. So the main aim in such fibrillations, in atrial fibrillation is that we decrease the conduction into the ventricle. तो हम चाहते नहीं है कि atrial fibrillation में सारे जितने भी contractions हो रही हैं या वो सारे के सारे ventricles में जाएं, तो उसके लिए because the area here is your AV node, तो अगर हम AV node को block कर दें तो obviously जो contraction जितनी भी atrial contractions हैं, all of them won't be able to enter into the ventricles and ventricles will be saved. So the main use of CCB is to decrease the conduction, right? And इसमें that is your PSVT, paroxysmal supraventricular tachycardia, so that they don't go into the ventricles. Peripheral vascular diseases, it happens in certain patients, like let's say these are their hands, ठीक है, so यहाँ पे for some reason intermittent जो इनके जो blood vessels हैं वो constrict हो जाते हैं, ठीक है, सिकुड़ जाते हैं, constrict होते हैं, जब वो constrict हो जाते हैं तो इस tips को blood नहीं मिल पाता, decrease blood flow. So they become very pale and all, right? So the main इसमें जो disease हम common है that is your Raynaud's disease. Well, it's usually in the periphery, digits में, toes में, fingers में, तो क्या होता है इस area को blood flow नहीं मिल पाता, that's why it becomes very pale. So the main thing here is that we relax these vessels so that they get the blood flow, and the relaxation is called by dihydropyridines. Subarachnoid hemorrhage in your central nervous system. So there is your central nervous system and let's say यहाँ पे hemorrhage हो गया, ठीक है, subarachnoid hemorrhage. Now what happens is whenever there is a subarachnoid hemorrhage, जो साथ वाली vessels होती हैं they start constricting, ठीक है, so साथ वाली जो vessels होती हैं they start undergoing vasoconstriction in the subarachnoid hemorrhage के आसपास,
And because of this vasoconstriction, the area to which they are supplying, obviously they will get less blood. So there is more chance of a neurological deficit because of this. Because that area is getting less blood, and that area will, there'll be infarction in that area, and it can have some neurological damage. So to prevent that, we use a drug that is your nimodipine. Classical, we have to remember this name, nimodipine. This drug enters, it is very lipid soluble, it will enter into the central nervous system and it will relax it is very specific for the cerebral blood vessels. It will do wonders there. So it will save the patient from any neurological deficit. So remember, nimodipine. Nimodipine is the drug of choice in subarachnoid hemorrhage to relax this. Then another condition of the heart is hypertrophic cardiomyopathy. Again, cardiomyopathy. Muscles are weak और हार्ट जो है वो हाइपरट्रोफीड हो गया ऐसे ऐसे करके, हाइपरट्रोफीड. ठीक है, लेट्स से अब मैं वेंट्रिकल्स बना रही हूँ, लेट्स से. तो दिस इज योर एट्रिया एंड दिस इज एवी नोड एंड वेंट्रिकल्स, हाइपरट्रोफीड हो गए. अब जो चीज़ इतनी हाइपरट्रोफी सख्त हो गई है, अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू पंप ब्लड जैसे नॉर्मल हार्ट करता है. ठीक है, मसल्स वीक है, हाइपरट्रोफी हो गई है. सो अगेन इसमें हमारा रीज़न क्या होएगा? टू गिव अ CCB टू डिक्रीज द. अगर वो नहीं पंप कर पा रहा ब्लड, तो हम क्यों उसका हार्ट रेट बढ़ाएं, क्यों कंडक्शन बढ़ाएं, क्यों उसको जोर दे कि तू you pump, because it cannot pump blood properly. So we have again to decrease the workload on the heart. So again, these drugs are effective in such, so they decrease the overall cardiac work. Preterm labor, this labor is you know what is labor, yeah? So when the right time is there, labor is most welcome. But let's say it is preterm, it is not the time for delivery. The lady is undergone, she has gone into preterm labor. टाइम से पहले अगर बेबी डिलीवर करेगी तो बेबी प्रीमेच्योर होएगा, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. So you want to delay labor. So you know that labor क्यों होता है? Because of uterine contractions, and these muscles, they cause relaxation. So they will cause relaxation of the uterine muscles and they will delay the labor. So they are used in preterm labor. Diabetic nephropathy is, one of the recent uses, because they are said to decrease the vascular damage in such patients. So, one important drug here is ACE inhibitors, जो हम use करते हैं, very good in patients of diabetic nephropathy. The other important drug, they're saying that even the CCBs, they can help in the similar way and decrease the vascular damage in these patients. Coming to last but not the least, a condition called as achalasia cardia. It's not very common, but let's say, what if they ask you, what is achalasia cardia? What happens? Though they will not ask into the physiology and everything, but you should know. The additional knowledge is never wrong, because then you understand their use. So, रट्टा मारने से अच्छा है कि आप समझो कि condition होती क्या है and how are the CCBs helpful. Now, achalasia cardia में होता क्या है in patients का? This is your esophagus and this is your stomach. Normally your food is going to go through the esophagus, and when food enters here, your lower esophageal जो sphincter होते हैं ये खुल जाएंगे, and the food is going to enter in the stomach and then go further, and the lower esophageal sphincter will close so that food वापस नहीं जाए. Now इनमें क्या होता है patients में, जो esophageal muscles होते हैं, they are paralyzed. So there is paralysis. So paralysis का मतलब है these cannot actually move the food in the downward direction. So they cannot push the food in the downward direction because the esophagus के muscles paralyzed हैं. तो वो contraction ही नहीं हो रही है muscles में कि food नीचे जाए. तो patient regurgitate करता है कई बार यही वाला food जो उसकी esophagus में होता है. So that kind of problem is there. So what we do when we give a calcium channel blocker, their role is to actually relax these lower esophageal sphincter so that they are open, so they don't close unnecessarily, so they are open. So food है आराम से नीचे जाएगा, नीचे कोई resistance नहीं है उसको कि इसको रोकने के लिए. So food can go downwards comparatively better as before. Otherwise there was restriction because of the lower esophageal sphincter बंद भी है. जब तक वो फूड नीचे नहीं जाएगा तो वो खुलेगा नहीं, फूड जा ही नहीं रहा है अच्छे से नीचे, तो उधर ही इकट्ठा हो रहा है. तो अगर हम नीचे वाला गेट खोल देते हैं तो एटलीस्ट फूड ग्रेविटी के थ्रू ही चला जाएगा नीचे. सो उससे क्या होएगा, आपकी रिगर्जिटेशन वगैरह कम हो जाएगी. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. सो दे आर यूज्ड टू रिलैक्स द लोअर esophageal sphincter so food can
go in आराम से. And you can give them just जब सब किसी ने उसने खाना खाना है patient ने, half an hour before the meals, so that the lower esophageal sphincter is relaxed and they can easily have the food and food can go down without creating any problems. Right, so these were the uses, and I promised you a hack to remember. Which by hack I mean I promise you a mnemonic by which you can remember all of them. ठीक है? So mnemonic के लिए हमें बहुत दूर नहीं जाना. अगर आपको इसकी एक ड्रग भी याद हो जाएगी, that is your Lacidipine. Lacidipine. So Lacidipine is a CCB, so you have to remember the name, and this name can give you clues to the uses of CCBs. So L say is your labor, your preterm labor. A say achalasia cardia. C say cardiomyopathy. I say ischemic heart disease. D say diabetic nephropathy. ठीक है. Another I say you can remember irregular rhythm, which is your cardiac arrhythmia. ठीक है. That is your this. P say peripheral vascular disease like Raynaud's disease. And you can I think this is the best way to remember PVD. अगर आपको Raynaud's नहीं भी याद है, PVD is also a good enough use to remember. ठीक है. I say increase in the BP, that we call as hypertension. And any together is the neural use or neuronal use, which is your subarachnoid hemorrhage. H. Right? So you remember the drug and you remember the uses also. So this is a very, very good hack to remember the uses of CCBs, which are so important to know for the exams. Then we have the adverse effects. Again, I'm telling you, if you know the uses, you will know the actions, you will know the adverse effects. जैसे heart पे adverse effect क्या है इसका? It can cause bradycardia. It can cause decrease in conduction. It can cause decrease in the force of contraction. तो ये इसके adverse effects हैं. Blood पे, because of vasodilatation, it can cause headache. It can cause flushing. It can cause decreased blood pressure, diastolic blood pressure, and it can cause ankle edema, which is common with these drugs because of, this edema is not because of retention of sodium water, this is because of vasodilatation. Now, you know the blood पे the drugs which are maximally effective are your dihydropyridines, and especially जो dihydropyridines short acting होती है, they tend to decrease the diastolic BP बहुत ज़्यादा decrease कर देती हैं. ठीक है. If they are short acting, so when they decrease the diastolic blood pressure, so what happens, your sympathetic system gets activated, baroreceptor system, and there is reflex tachycardia, and that's a problem or side effect with dihydropyridines. So short acting dihydropyridines are no longer used now, no longer indicated. हम longer acting drugs use करते हैं ताकि उनमें reflex tachycardia ना हो, because reflex tachycardia can be dangerous अगर patient is a patient of angina or any cardiac abnormality, because उसका cardiac work increase हो जाएगा अगर tachycardia हो जाएगा. So this is one drawback with short acting dihydropyridines. Others, because of relaxation of, let's say, the GIT smooth muscles, it can lead to constipation. That is another side effect. Right. So these are the side effects. Very easy to remember, right? And coming to your drug interactions. Drug interactions में बस दो important drug interactions हैं. एक ही group से beta blockers के साथ, which that is very important. So whether beta blockers should be combined with verapamil. What do you think? Should they be combined with verapamil? Let's see. What do beta blockers do? Especially the beta 1 blockers अगर हैं. So what they do on the heart? They also decrease the heart rate and they also decrease the force of contraction. Verapamil also decreases the heart rate, also decreases the force of contraction. So double effect हो गया ना? So it together they have a depressant effect on the heart. Together, so they should not be used because they have a double depressant effect on the heart. But what if we combine beta blocker with the dihydropyridine?
Do you think that is acceptable? Let's see. Dihydropyridines ने क्या किया था? I told you, they, अगर short acting especially, what they did, dihydropyridines, they decreases the diastolic blood pressure, जिसकी वजह से, what did I tell you, what happens when you decrease the diastolic blood pressure? There is reflex tachycardia, heart rate increase हो जाता है. ठीक है, that is a problem issue with people who have cardiac disease already. तो if you give a beta blocker in these patients because they decrease the heart rate, तो ये वाला जो इफेक्ट है वो इसको compensate कर देंगे. ठीक है, so in this dihydropyridines, they can be used with beta blockers, but verapamil should not be used with beta blockers. So this is all about the CCBs that you should know. As I told you, so important क्या है हमारा, जो question for the exam is your mechanism of action. And mechanism of action is simple, that you should know. They block the L-type calcium channels. They don't block any other channel. So on the heart, decrease in heart rate, decrease conduction, decrease in the force of contraction. So on the smooth muscles, they relax the blood vessels, especially the arterioles and also the other smooth muscles. The calcium channel blockers are of three types. Phenylalkylamines, that is verapamil, they are more specific for the heart. Benzodiazepines, they work, which is diltiazem, they work on both. Dihydropyridines, they work mainly on the blood vessels. And for the uses, please remember the hack or the mnemonic, which is Lasitipin. L is for preterm labor, A is for clesycardia, C is for cardiomyopathy, I is for IHT, D is for diabetic nephropathy, I is for irregular rhythm or cardiac arrhythmias, P is for PVDs. Again, I is for increase in the blood pressure or hypertension, and N is for neuronal, which is your subarachnoid hemorrhage. Then you have your adverse effects on the heart. Whatever the effects, there can be an adverse effect for some other people. And dihydropyridines, the main problem is because of relaxation of the blood vessels as well as the smooth muscles and GIT leading to constipation. So smooth, agar blood vessels relax ho rahe hain, so headache, flushing, decrease in the diastolic blood pressure, which leads to reflex tachycardia, and that can be harmful for patients who are like the cardiac patients, and ankle edema, of course. Drug interactions important is with beta blocker. Verapamil should not be combined with beta blocker, while dihydropyridines can be combined with beta blocker. So that is all about CCB, what you should write in your exam. This is more than sufficient knowledge to be written in the exam. So take important notes from here, and you can refer to your book later on and add whatever other important things you want to know, but just put it in your notes there, and that is all that you have to see at the end to revise. So if you like the video, please hit the subscribe button and comment, and I'll be coming up with more such videos again. Thank you.